खुशामदीद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर अपना अपना। एवरी होम इज़ ब्यूटीफुल। बेशक हर घर खूबसूरत होता है, बस थोड़ी सी कोशिश और मेहनत लगती है इसे खूबसूरत बनाने के लिए। सो आई होप माय यूट्यूब फैमिली इज़ डूइंग ग्रेट बाय गॉड ग्रेस एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आज का वीडियो है सिंपल ज़ीरो कॉस्ट DIY हैंगिंग प्लांटर, जिसे आप घर पर पड़े सामान से आसानी से बना सकते हैं। एंड आई बिलीव दिस विल लुक सो क्लासी एंड ब्यूटीफुल विदाउट मच एफर्ट्स पुट इनटू इट। आप इसे ऐसे ही हैंग कर डेकोर पीस की तरह भी लगा सकते हो, या फिर मेरी तरह एक प्लास्टिक कंटेनर को फिक्स कर एक हैंगिंग प्लांटर भी कन्वर्ट कर सके यूज़ कर सकते हो। सो लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए मेरे पास ये एक छोटा एक स्प्रे क्लीनर पड़ा हुआ था जो टूट गया। सो आई इमीडिएटली थॉट टू यूज़ दिस कंटेनर विच इज़ ब्रोकन। सो इसके लिए आपको एक वुडन प्लैंक चाहिए, कुछ डेकोपाच पेपर्स, एंड इफ़ यू डोंट हैव डेकोपाच पेपर यू कैन यूज़ न्यूज़पेपर कटिंग्स, मैगजीन कटिंग्स, आपके नॉवल का फेवरेट चैप्टर का पेज, या कोई डिज़ाइन टिश्यू पेपर। एंड यू ऑल्सो need acrylic color of your choice, brush and varnish to protect it. तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने इस वुडन प्लांक को वाइट कलर से पेंट किया। यू कैन यूज प्राइमर बट सिंस इट्स अ स्मॉल पीस therefore I directly painted with acrylic paint. Then I pasted decoupage paper with decoupage glue. If you do not have glue then you can make by mixing some same quantity of water and Fevicol to stick the paper, and you can see it's already looking so pretty and chic. You can place it as it is on your table as a decor. पर मुझे इसे हैंगिंग प्लांटर बनाना था और मैंने इस पर वार्निश स्प्रे किया टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर और एनी काइंड ऑफ अ डैमेज। एंड इसके बाजू में आई मीन टू द साइड ऑफ इट मैंने इसको छोटे से 0 नंबर के नेल्स ठोका है। एंड आई टाइड इट विद अ पर्पल एंड पिंक थ्रेड आई हैड। यू कैन ऑल्सो यूज जूट और मैक्रामे रोप। सो जो लिक्विड कंटेनर था इसमें मैंने छोटा सा होल किया बाय हीटिंग अ नेल, एंड आई हैंग्ड इट विद द सपोर्ट ऑफ द नेल इन द plank, and voila, the beautiful and elegant hanging planter is ready. So मैंने इसे मेरे घर के कई प्लेसेस पर रखा था, एंड जो भी आता था तो दे यूज्ड टू आस्क मी, hey, it's a beautiful piece, where did you get it from? एंड मैं प्राउडली बोलती हूँ कि दिस इज़ मेड बाय मी, दिस इज़ माई क्रिएशन। ओके, सो मैंने इसको मेरे घर के काफ़ी प्लेसेस में रखा है। जैसे कि ये देखिए, मेरे लिविंग रूम के वॉल शेल्फ है, उसमें हैंग किया है, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग। एंड आई बिलीव I personally like using live plants to decorate home, and I believe plants transform whichever place or nook they are kept in, giving it a whole new appearance. And I'm sure you also agree with me, and if yes, do leave your like on the comment box. And इसे मैंने अपने bedroom में भी लगाया है, and it has totally transformed the place and brought in so much life to the corner. So guys, I trust me, it looks so beautiful, and especially the decoupage print I had, the rustic window with a bicycle and a flower basket on it. So it looks so ethic and so nice, एक kind of a rustic kind of a look दे रहा था। So and I feel friends, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, so please do leave comments or your feedbacks in the comment box so that I can improve making my videos, upcoming videos, and do give suggestions what would you like to watch in upcoming videos so that you can make content on similar topics. So please, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड डू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you can get a notification of my upcoming videos. Seriously guys, it takes lot of efforts to make one small video, and आपका एक लाइक मुझे काफ़ी सारा encouragement देता है to make more such videos. So please do subscribe to my channel. Take care of yourself, good care of yourself. See you soon in the next video. Bye, take care again.